participants, please disseminate the message to join the Right. So good afternoon once again to everyone. Right. And I will be continuing जो हमने पिछली सेशन में डिस्कशन करी थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा आगे and we'll discuss definitely new things and meanwhile you can also post up your questions, right? Right. So I'm starting with the very first question with all of you, right? And the first question goes is कि जब हम रिसर्च करते हैं ना तो हम कहते हैं रिसर्च को फिर हम पब्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, राइट? जरूरी है कि हर रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ जाए? Is it necessary that every research should go towards publication? participants respond and write in chat box side by side. It is interactive session. Right. So क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि जो भी हम रिसर्च करते हैं जरूरी है वो पब्लिकेशन की तरफ जाए? अगर हाँ तो why we need to make it in terms of publicizing it, right? And if not, why not? See, important thing is कि जो रिसर्च है ना, हमें मान के चलते हैं रिसर्च जो है ना उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए. एग्री? इफ यू आर डूइंग सर्टेन रिसर्च it should benefit everyone who is involved, right? But benefit is not only confined that your research is only meant for a journal, right? So research सिर्फ और सिर्फ जर्नल के लिए नहीं होती है. और मैं वापस भी बोल रहा हूँ कि पब्लिकेशन के लिए रिसर्च मत करो, रिसर्च इसलिए करो क्योंकि रिसर्च करनी है, right? Many companies those who do research, they do not publish in journal but they do have the dissemination. ठीक है? डिसेमिनेशन का मतलब है कि आपकी रिसर्च जो है ना वो उन लोगों तक पहुंच जानी चाहिए जो लोग उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, उससे जुड़े हुए हैं, और जरूरी नहीं है वो चीज सिर्फ और सिर्फ जर्नल से जाए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द मेजर प्रोजेक्ट्स, राइट? यूजीसी बहुत सारी ग्रांट देती है फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स. सिमिलरली डीएसटीआई देती है, सिमिलरली आईसीसीआर देता है, and there are so many things which will happen, right, by which you are able to publicize your research so that it becomes available to those for whom does it matter, right? So my concern is that please fix up your target, right? Target is not only for journals, right? Research can have aspect with reference to cases as well, right? Business cases, right? Research can happen with major projects. Research can happen with the presentation as well. तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल उसके लिए है वो जरूरी नहीं है, राइट? बट इट इज नेसेसरी कि अगर आपने कोई रिसर्च करी है तो वो लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वो मायने रखती है. बट सिर्फ ये सोच लेना कि आप पब्लिकेशन कर रहे हो वो रिसर्च है, वो गलत है, राइट? रिसर्च इज अ वेरी ब्रॉड फिनोमिना जिसकी पब्लिकेशन के आउटलेट्स अलग अलग हो सकते हैं, होने चाहिए, और आपकी रिसर्च सिर्फ जर्नल तक सीमित नहीं होनी चाहिए. इट हैज अ डिफरेंट एंड अ ब्रॉडर मीनिंग इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, राइट? सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी रिसर्च है ना
वो बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ पर एक दूसरा मुद्दा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे अभी हम डिस्कशन करेंगे, वो जो हम पिछले वाले उससे लेकर चल रहे हैं कि कुछ जर्नल्स ऐसे हैं विच आस्क यू टुवर्ड्स एपीसी। एपीसी इज बेसिकली आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, है ना। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें आपसे पैसा चाहिए, राइट। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो कहते हैं हमें पैसा वेबसाइट चलाने के लिए चाहिए, एंड सो फोर्थ। अब हमने एक डिस्कशन किया कि जो जर्नल्स है ना, ये हमसे पैसा ले रहे हैं, बट वाई दे आर टेकिंग मनी? दे आर टेकिंग मनी बिकॉज फॉर देम इट इज अ बिजनेस, और हर बिजनेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। तो उस कॉस्ट को बियर करने के लिए उनको पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। लेकिन कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो कि पैसा नहीं लेते। तो जो जर्नल पैसा नहीं लेते, वो बिजनेस कैसे करते हैं? एनी आइडिया? जर्नल्स विच आर नॉट चार्जिंग मनी, हाउ दे विल गेट रेवेन्यू? बताइए। इम्पैक्ट फैक्टर नहीं, इम्पैक्ट फैक्टर यूडीसी किसी जर्नल को कोई मदद नहीं करता। नो। आईसीसीआर की ग्रांट तो रिसर्चर को मिलती है ना, जर्नल को तो नहीं मिलती है। नो गवर्नमेंट इज गिविंग एनी मनी टू द गवर्नमेंट। देखिए, जर्नल्स जो हैं वो भी दो तीन तरीके के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक जर्नल है जो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ अटैच है ना। इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि वो किसी यूनिवर्सिटी का जर्नल है, किसी इंस्टीट्यूट का जर्नल है, वहां से अटैच है। एक जर्नल ऐसा है जो कि किसी पब्लिशिंग हाउस से अटैच है, राइट। राइट, इसके अलावा आपको कुछ दिमाग में आता है? यही बेसिक दो टाइप्स है, कि या तो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ टाइड अप है जर्नल, या किसी पब्लिशिंग हाउस के साथ है। अब जो पब्लिशिंग हाउस वाला जर्नल है, उसके पास रेवेन्यू कैसे आएगा? बताइए, उसके पास रेवेन्यू कैसे आएगा? You can write in the chat box like Madhya Bharati. What What is that? exactly do you mean by Seema? Book publication. Okay. Nobody gonna sponsor them. See, If so it is now what? access to each and everybody, it will also. More articles, agreed, but that will increase your quality. How will get money? How will get money? Right? If it is attached with the university, the objective is not minting money. Objective is quality. So that is something which you are incurring a cost. But जो publishing house के साथ हैं, for them it is a pure business, and every business needs profit. So how will they generate revenue? How will they generate money? So the simple way out is that, let's suppose any particular journal is having, let's say, 4 issues in a year. That you understand, 4 issues in a year, मतलब हर 3 महीने बाद उनका एक issue निकलता है, right? Now for every issue, let's suppose they have 10 articles and papers in that particular issue. That means they are going up with 40 such papers in a year, right? ऐसे जितने पब्लिशिंग हाउस हैं, they have almost 10 to 60 different journals under their publishing house, right? अब ये जो publishing house है ना, these houses say to the university or the institution that आपके यहाँ पे जो रिसर्चर है ना, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर है, चाहे आपका प्रोफेसर है, उसको मैं अपना जर्नल जो है ना, वो पूरा तभी दिखाऊंगा, पूरा जर्नल या पूरा आर्टिकल तभी मिलेगा जब आप उसका लाइसेंस लोगे। And for license they charge fees, which is roughly moving from 3 to 5 lakh rupees per year, which is roughly around 3 to 5 lakh rupees per year. इतना बात हमें समझ में क्लियर आता है, समझ में आता है, right? So these journals
and these publishing house are looking up fees from the different academic institutions where researchers are working. Agreed? Agree, disagree? Give your viewpoint. Right, रुचि? Right? लेकिन अभी देखो, एक नया कॉन्सेप्ट आया, आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? स्काई हब. How many of you heard of Sky Hub? Right? So if you're aware of Sky Hub, it will give you any research paper more or less for free. आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी रिसर्च पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री. ऐसा ही है रुचि, वी कैन हैव द फ्री पब्लिक फ्री पेपर फ्रॉम स्काई हब. राइट? अब अंडरस्टैंड कि मेरा बिजनेस था कि मैं आपको रिसर्च पेपर लेने के लिए अपना लाइसेंस भेजूं, फीस भेजूं, लेकिन वही चीज एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे फ्री में मिल रही है. सीमा स्कोपस इज द इंडेक्सिंग, वो एक तरह से रेटिंग एजेंसी है जो रेट करती है कि आपका जर्नल किस क्वालिटी का है. ठीक है? सो अब ये हुआ तो जर्नल जो है, उस जर्नल की कोई फीस देकर उसका कोई लाइसेंस खरीदेगा क्या, जब वो चीज आपको फ्री में मिल रही है? नहीं खरीदेगा. राइट? अब वो नहीं खरीदेगा तो जर्नल का पैसा जो है वो आना कम हो जाएगा. राइट? सो मोस्ट ऑफ द जर्नल्स हैव नाउ स्टार्टेड अ न्यू कॉन्सेप्ट, और जो हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम है ओपन एक्सेस. सुने कभी आपने नाम ओपन एक्सेस? ओपन एक्सेस. राइट? ओपन एक्सेस का मतलब क्या है कि जर्नल्स जो है ना, दे आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ थिंग्स एज ऑफ नाउ मूविंग. राइट? इनफैक्ट 3. पहला कॉन्सेप्ट उनका है ओपन एक्सेस. ओपन एक्सेस का मतलब है, ठीक है, आई एम पुटिंग इट एज ओ, ठीक है, फॉर ओपन एक्सेस, NO फॉर नॉन ओपन एक्सेस, एंड H फॉर हाइब्रिड. अब ध्यान से समझो, ओपन एक्सेस का मतलब है कि आपको वो कहते हैं कि आपका पेपर जो है ना, उसको हम आपसे कुछ पैसा लेते हैं, and we will take your paper under open access, which means your research paper can be seen in full, can be downloaded by anyone. मतलब कि मैंने कोई लाइसेंस, कोई फीस नहीं दी आपके जर्नल के लिए, लेकिन अगर उस जर्नल में आपका रिसर्च पेपर है जो कि ओपन एक्सेस है, तो मैं उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को, उस आर्टिकल को फ्री में डाउनलोड कर सकता हूं. Agreed? That is free to access, right, Rinku? That is free to access. इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि आपने एक तरीके से जो लाइसेंस फीस देते थे ना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो ना देकर आप अपने पेपर के रेफरेंस में दे रहे हो. गुड और बैड? गुड और बैड? आई विल गिव यू अ व्यू पॉइंट, अब आप बताना गुड है बैड है. जो रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर को लिखने में कुछ इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगी होगी, आपका दिमाग लगा होगा, आपके एफर्ट्स लगे होंगे. वो किसके एफर्ट्स हैं? और सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगती है. आपका दिमाग लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका प्रिंटर, आपकी रातें, आपका टाइम. राइट? आप जर्नल को कह रहे हो उसको सबको बचाओ, और उसके लिए आप उसे पैसा भी दे रहे हो, लेट्स सपोज 60,000. गुड और बैड? आप ही का काम, आप ही पैसा देके कह रहे हो उसको सब जगह भेज दो. अब इसके पीछे बहुत बारीकी से एक चीज समझिए कि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं.
सपोज करो एक वेस्टर्न कंट्री में प्रोजेक्ट मिला 5 लाख रुपीज का, ठीक है। वो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो गया तो वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो रिसर्च की फाइंडिंग है ना, वो सारी दुनिया तक पहुंच जाए। और वो कहते हैं इसके लिए हम एक जर्नल चुनते हैं जो कि ओपन एक्सेस में होगा, और हम अपना पेपर ओपन एक्सेस में डाल देंगे, हर एक के पास हमारी रिसर्च पहुंच जाएगी। गुड और बैड? गवर्नमेंट ने फंडिंग करी है, गवर्नमेंट चाहती है सब लोगों तक सब चीजें पहुंचे, दिस इज गुड। तो ओपन एक्सेस तरीके से बेनिफिट दे रहा है, सबके पास वो चीजें जा रही है। लेकिन अब हमारे कॉन्सेप्ट में देखो, रिसर्च भी हम कर रहे हैं, पैसा भी हम दे रहे हैं, राइट, सो दैट इट मूव्स टू एवरीबडी। पहली चीज। सेकंड थिंग, इन ओपन एक्सेस many journals again have taken a business that they say कि आप अगर ओपन एक्सेस में डाल रहे हो अपना कोई भी पेपर, तो मोर और लेस छप ही जाएगा, बिकॉज इट कम्स विद हेफ्टी अमाउंट। आप प्रीडेटरी जर्नल में लगभग लगभग 5,000 रुपया देते हो, ओपन एक्सेस में करीबन आप 50,000 रुपया देते हो। तो ओपन एक्सेस में आपका पेपर पब्लिकेशन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं विद अ गुड जर्नल। एग्री? एग्री? यस। तो बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं आज की डेट में जो कहते हैं कि हम ओपन एक्सेस नहीं हैं। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो कहते हैं हम ओपन एक्सेस ही है, सिर्फ और सिर्फ ओपन एक्सेस है। और कुछ मीडिएटर वाली बात करते हैं, कुछ कहते हैं जो आर्टिकल्स ओपन एक्सेस मांगते हैं उनको ओपन एक्सेस दे देते हैं, जो ओपन एक्सेस नहीं मांगता उनके लिए हमारा नॉन ओपन एक्सेस है, राइट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ द ओपननेस वर्सेस नॉन ओपननेस। ठीक है ना। तो मैं आपसे अभी एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ अपनी, उसी के रेफरेंस में हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, एंड देन वी विल डू सर्टेन काइंड ऑफ practical in that particular regard as well, right? Give me 1 minute. Are you able to see anything? It is showing sharing, sir. It is showing open access publication. But it is not open. Not open. Give me 1 minute. Is it visible now? Again showing screen sharing. You're not showing anything else? No, sir. Okay. Is it better now? Now it is open. Great, right. So we are able to see aspect for open access publication, where you see two of the things which are out there, right? Which is non-open access and a open access, right? Now, when we are saying non-open versus open access, as of now, we are able to have a discussion that this non-open access is generally which has no money involved, and open access is that where the money is being involved in one way or the another, right? Now, understand that when we move ahead in this, we can refer to this particular thing in this particular regard. Have a look to this. Do you agree that a conventional or a non-open access journals are such, right, where the publishing cost, right, are being accessed in different aspects, right, and which is being taken care by the reader. But in open access, it is funding by which is not paid by the reader in this particular regard. Are you able to differentiate the two? Yeah. So if we look across in the similar manner,
right? Like I've given an example for a university which wants the things to be disseminated to everyone, the things looks very fine. But the moment when we look upon that it is supposed to be paid by the reader, the things becomes different altogether, right? So if we look across over here, and if I say it has to be paid, right, by reader, which journal it is, which excess it is, paid by reader. If the money is to be paid by reader, which particular access it is. Yes, screen is not visible as of now, Priya. I have muted the screen, right? It is non-open access, right? But if it is paid by the author, right? But if it is paid by the author, it becomes a open access, right? So that is a basic difference which is happening between an open access versus a non-open access, right? Now, if we move ahead in the similar scenario, and when we go across, right, we are able to identify that on the same thing, the next kind of things which can happen. Are you able to see something over here? Right, which is the gold, old, and the hybrid, right? So when you're looking upon the gold, old, and hybrid, it basically focusing on that old is the conventional practice where payment is to be made by the reader. Gold is where payment is to be given by the reader, which is an open access. And hybrid is where both kind of possibilities can occur depending upon the different types of articles which is being out there in this particular regard. Anyone having any confusion between the three, the open access, non-open access, and the hybrid? Anyone having any confusion between an open access, non-open access, and a hybrid one? Are we clear? Can we make a move? I'm showing you one practical example so that you are able to relate the same thing and we are able to understand it from these particular. Sonu, you want to say something? Yeah. I will be doing, don't worry, Pushpa and Sonu. But I'm showing you one example, and from that particular example, you are able to get most of the things sorted out. If not, I will again repeat, right? Don't worry. There is Pinky saying that, sir, please summarize and repeat in brief. Right. I am doing so. Give me 1 minute and I will be doing so, because I am able to take the things with a practical approach and that will make the things more clearer to them. I hope our website is visible to all of you. Is it? Showing sharing. Yes, It it is is, now. right? So in this particular journal, if you look across with reference to the South Asian Journal of Marketing, right? And if you look across with their conceptual integration over here, right? We're able to see that this particular journal is having its own aspects, own information, right? And it will give you an idea that which particular kind of thing it is, right? I'm stop sharing and giving you the another link because the journal has the second link which is working on in this particular regard, right? So are you able to see the new link of the journal? Are you able to read out the description? Is this portion clear? Description? Are you able to Yes. see that? Right? Yes. Right. So over here, what you can see, it says the South Asian Journal of Marketing is an international, open access, peer reviewed, and blah 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 blah. अब आप मुझे बताओ कि ये जर्नल जो है ना, ये ओल्ड है, गोल्ड है, या हाइब्रिड है? This journal is old,
gold or hybrid? Gold. Okay. We have a response from Monica, looking for others' response. Gold means only open access. Old means only non-open access, and hybrid means both. जवाब दीजिए, गलत दीजिए, चलेगा. ऑप्शन भी 3 ही है. देखिए, इसने अभी आप इसको ध्यान से देखिए. It is saying to you that it is open access. Is it only open access? Is it only open access? No. ओपन एक्सेस भी लेता है, लेकिन सिर्फ ओपन एक्सेस नहीं लेता. गेटिंग माय पॉइंट? लेता है, लेकिन सिर्फ ओपन एक्सेस नहीं लेता. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज हाइब्रिड. अब इसको और अच्छी तरह यहां से देखिए आप. ठीक है, जब आप इस पर्टिकुलर जर्नल में जाएंगे, go to the author guidelines. In author guidelines, you are able to see so many things which is being out there, right? Which is like this. This is a sponsored open access journal, right? And this, right? Publication is free in that particular regard, right? But it is not the only thing which is happening with them, right? You can have your journal article published without any particular amount, right, which is out there, right? So you have everything being over here, but it is not the only thing, right? ये पढ़ो, यहाँ से आपको दिखेगा. Are you able to see something? The only time we will ever ask you for money to publish in an Emerald journal is if you have chosen to publish via the gold open access route. You will be asked to pay an APC once your paper has been accepted, unless it is a sponsored open access journal. Getting my point? Yes. इसका मतलब journal is not only looking for open access, it is having both open access and a non-open access, which means it is a hybrid kind of a journal. Any doubt? Any doubt to anyone? Are we clear? Yes, sir. Right? Should I show you the second example so that you're able to link it up more particularly? Give me a second. Okay, I'm just sharing one of the website once again for your viewpoint, and with a viewpoint that everybody of you knows about IIM Bangalore, right? IIM Bangalore, they also publish a research journal, right, which is something like this, right, which is the institutional review board, right? And then they have a journal which is your IMB, right, which is being out here, right? Now understand over here, right? And if you look across over here, you're able to identify that they have not mentioned anything about open access, right? Nothing is being mentioned about open access. कहीं पर भी open access का word जो है वो आप देखिए यहाँ पर use नहीं हुआ, right? That means they are not asking any particular money even through the route of an open access, right? And in that particular case, this becomes very, very important to understand that they do not follow something called as a open
एक्सेस। तो अगर ये ओपन एक्सेस फॉलो नहीं कर रहे तो ये कौन सा जर्नल होगा? It is a non-open access old, very right. Uh, Pooja, what is exactly is your question? Can you please retype with a viewpoint so I can see over here? So I am Bangalore Journal is a pure old non-open access journal. I've shown you the example for the hybrid one, right? Where you are able to link it up in this particular regard, right? So that is where we are able to identify that thing has to be taken care upon with this particular perspective of open access versus the non-open access aspect, right? Pooja is saying if a journal is already in open access, Right. means for reader available free of cost. Why See, someone pay for that? the person who is paying for that is not the reader, it is the author, Okay, hoping Pooja you have got your answer. right? वापस बोल रहा हूँ पूजा, जो ओपन एक्सेस है उसमें पैसा जो है वो रीडर ना देकर ऑथर दे रहा है, और जो नॉन ओपन एक्सेस है उसमें पैसा ऑथर ना देकर रीडर दे रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि रीडर के बिहाफ पे उसका इंस्टीट्यूशन पैसा खर्च करके लाइसेंस ले ले, राइट? दैट इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस व्हिच विल come across in this particular regard. I hope it is clear to you. Now I am sharing my screen with you where you are able to see something called as a directory of open access journals, right? This directory of open access journals will give you those journals which are only open access and have the journals which you can access at your own. Now there's an exercise for, I hope all of you are able to see this website, which is Yes, sir, DOAG. visible. Are you able to see that? Visible, sir. Right. So I request everyone to please open this particular website in your mobile or laptop, whatever you are using, and identify the journal of your choice with any particular field in which you are looking for. For example, if I look upon subject and if I look upon over here as management, right, I'm able to identify certain journals which are open access, right? Similarly, please try to identify journals which you think are open access journals in your field. Do let me know if you're able to identify, and if you're able to identify, at least type them in the screen so that I can get a viewpoint that yes, you are able to find it out. It is DOAG, Directory of Open Access Journals. I'm unscreening myself so I can see the responses. It is DOAG, right? Please identify certain journals which you think are journals which you are able to identify with reference to the specific field you belong to. And if you are able to identify, at least write down the names in the chat box. We will take another 2-3 minutes for this exercise. अपनी अपनी स्ट्रीम और फील्ड के जर्नल्स आइडेंटिफाई कीजिए जो सर ने डायरेक्टरी ओपन एक्सेस जर्नल की आपको साइट बताई है। कोई साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का ढूंढ सकता है। Exactly. IZMRA। Exactly. और आपको जब मिलता है राइट मोनिका कोड, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके एरिया में कौन सा जर्नल है जो उस तरीके से मूव अप कर रहा है। बट देखिए, इस ये जो हमारे सेशंस है ना,
मुझे बाकी स्पीकर्स का नहीं पता हाउ दे आर कंडक्टिंग, बट फॉर मी आई एम वेरी श्योर दैट आई कंडक्ट ऑल दिस सेशंस एज अ वर्कशॉप, कि जब आप अपने सेशंस के बाद बाहर निकलो ना, तो आपके पास कुछ हाथ में हो, सो दैट यू आर एबल टू लिंक इट अप, राइट। प्रैक्टिकल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो भूल जाओगे, पर अगर ऐसा कुछ काम किया है तो आपके पास वो चीज याद रहेगी, अपने हाथों से करोगे तो आप रिकॉल भी कर पाओगे। डू यू एग्री? डू यू एग्री ऑन दैट? गुड। Please राइट। write the field also, to which field the journal is related. Yes, Mamta, we can access all over the world journals over here which are into the open access aspect. And the beauty of this particular repository is it is not specific. You can refer to any field journal over there. We have 2 minutes more for this. We will close this exercise exactly at 14:45. Please write down the name of your journal, what you've identified from the DOAG, which is Directory of Open Access Journals. Right. Right. Now, once we have done with this particular aspect, please be very sure that by having an open access, जर्नल कोई अच्छा या बुरा नहीं हो जाता। ओपन एक्सेस एक फैसिलिटी है, राइट। इसके होने ना होने से जर्नल अच्छा बुरा नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे इम्पैक्ट फैक्टर्स की हमने बात करी थी, राइट। बट ओपन एक्सेस इज गुड ओनली व्हेन, जब आपके पास फंडिंग हो। अगर आपके पास गवर्नमेंट की फंडिंग है या कोई भी फंडिंग है, देन यू आर यूटिलाइजिंग दैट फॉर ओपन एक्सेस, इट मेक्स सेंस। But as a researcher, individual researcher, if you are going for an open access, people may think you कि आपने कुछ गड़बड़ करी है ना। तो ओपन एक्सेस बुरा नहीं है, कब ओपन एक्सेस यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। इफ यू आर हैविंग अ फंडेड प्रोजेक्ट and if you want to specify that thing to the entire world, open access is a very good mechanism, right? Monica, what's your question? You've written Scopus. What exactly is Scopus? I'm not able to get it. Monica, we have another session for Scopus, and Scopus sir has cleared for so many times. It is just indexing. चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं। And when we are saying this open access and the different perspectives into it, let me touch you on some smaller bits and pieces. See, there is something called as a indexing, right? And there is something called as the aspect which relates with your factors, right? So which I put across the aspect for indexing. Indexing का मतलब होता है that you are qualified for a particular list, right? For example, if I say, बहुत simple example आपको देता हूँ, एक class है where there are 60 students, you say कि जो top 10% बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चे हो गए? If I say there is a class of 60 and there are top 10% of students, how many students are there? 6, right, Pooja? So what I say that these 6 students
विल बी इन माय डीन लिस्ट। तो ये 6 बच्चे जो है ना, इनको मैं डीन लिस्ट में डाल दूंगा, ये मेरे बहुत अच्छे बच्चे होंगे। ऐसे ही एक लिस्ट बनी जिसका नाम है स्कोपस, और स्कोपस पे हम बहुत अच्छे जर्नल्स को डालते हैं, राइट। अबे अच्छे जर्नल एक टाइम पर अच्छे थे, अभी बुरे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए स्कोपस की जो लिस्ट है ना, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, राइट। आइडिया इज दैट वी शुड हैव अ गुड थिंग ओवर हियर, तो इसीलिए हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। ये सिंपल सी स्कोपस की लिस्टिंग है, बहुत ब्रीफ शब्दों में, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, इनकी रैंकिंग होती है, राइट। रैंकिंग का मतलब है दैट यू से दैट जर्नल इज एट विच पर्टिकुलर लेवल, राइट। वहां पर उनका इम्पैक्ट फैक्टर रोल प्ले करता है। अब अगर किसी का इम्पैक्ट फैक्टर 8 है, तो वो 5 से तो बेहतर ही होगा ना, सिंपल सा मतलब है। ऐसे ही, हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर फ्रॉम मैनेजमेंट? हाउ मेनी ऑफ यू हेयर आर फ्रॉम मैनेजमेंट? रेज अप योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर हेयर फ्रॉम मैनेजमेंट डिसिप्लिन? प्लीज रेज अप योर हैंड्स। Right. So those who are from management, right? The important journal listing, apart from this, which happens, is something called as ABDC, right? Which is Australian Business Deans Council, जिसके अंदर जो जर्नल्स हैं वो हमारे पास आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ ए स्टार, ए, बी और सी में। तो इसका मतलब ए स्टार वाला ए से बेहतर, ए जो है वो बी से बेहतर, सी बी जो है वो सी से बेहतर, राइट। तो हर डिसिप्लिन में एक इंडेक्सिंग आपको मिलेगी, और एक कैटेगराइजेशन मिलेगी, रैंकिंग मिलेगी और रेटिंग मिलेगी, जिसके रेफरेंस में यू आर एबल टू सी ऑफ द थिंग विच इज आउट देयर। अब ये तो हुई ग्लोबल फिनोमिना। हमारे इंडियन फिनोमिना में यही चीज कहां पर निकल कर आई, दैट दे कम अप विद द यूजीसी केयर लिस्ट। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये जो यूजीसी केयर लिस्ट है ना, ये इंडेक्सिंग है या रेटिंग है? यूजीसी केयर लिस्ट जो है वो इंडेक्सिंग है, रेटिंग है? ओके रिंकू, सो वी हैव टू डिफरेंट आंसर्स। इंडेक्सिंग का मतलब है, देखिए यूजीसी केयर की लिस्ट में ऐसा कहते हैं क्या कि पहले 1 से 50 जर्नल जो है ना वो सबसे अच्छे हैं, फिर उसके बाद वाले हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? वही बता रहा हूँ, पूछा मैं आपको। यूजीसी केयर लिस्ट में रैंकिंग है क्या? We say that this is the number one journal in the UC care list. It is specified or no? No rank. Every journal is as good as the another journal. तो हमें उसके अंदर क्वालिफाई करना है बस, उसके अंदर हम कितने अच्छे हैं ऐसी बात नहीं हो रही है। ठीक है पूजा, तो ये इंडेक्सिंग है या रैंकिंग या रेटिंग है? दिस इज इंडेक्सिंग और रैंकिंग, राइट। इवन इफ देयर इज नो इम्पैक्ट फैक्टर, एग्री सीमा? तो यहाँ पर हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं या रैंकिंग कर रहे हैं? इंडेक्सिंग कर रहे हैं। हमने दो ग्रुप्स बना लिए ना, एक यूजीसी वाला, एक नॉन यूजीसी वाला। जो यूजीसी वाला है वो एक ग्रुप है, नॉन यूजीसी दूसरा ग्रुप है। अब जो यूजीसी वाला ग्रुप है उसके अंदर कौन कितना अच्छा है इसकी हमने बात नहीं करी, हमने सिर्फ इतनी बात करी इसके अंदर कुछ जर्नल्स शामिल हैं, कौन एक दूसरे से अच्छा है उसकी हमने बात नहीं करी। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि यूजीसी भी विद इन जर्नल्स में रैंकिंग ले आए, है ना। कि यूजीसी केयर तो है, पर उसके अंदर भी 1 2 3 पायदान हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाउ मेनी ऑफ यू एवर हर्ड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन नैक, NAAC, right? If you've ever heard of NAC, it basically is National Assessment and Accreditation Council। गवर्नमेंट की हमारी बॉडी है जो देखती है कि एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज कैसा है, राइट इज बीइंग रिटन, और वो उनको डिफरेंट
रैंकिंग देती है, विच इज A++, A+, A, B++ एंड सो एंड सो फोर्थ। इसके अंदर नैक ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है 15 दिन पहले कि हम इसकी रैंकिंग में ना सिर्फ और सिर्फ जो जर्नल्स लेंगे वो यूजीसी केयर वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ यूजीसी केयर वाले जर्नल्स लेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि रैंकिंग और रेटिंग से मतलब नहीं है, उसके अंदर जितने भी जर्नल्स हैं दे आर सेम। एग्री? दे आर सेम, राइट? रिंकू इट इज इंडेक्सिंग, यस। अब यूजीसी केयर आपको दो बातें बोलता है। जो यूजीसी केयर है उसकी लिस्ट आपको दो तरह के जर्नल देती है। एक आपके पास है ग्रुप 1 और एक आपके पास है ग्रुप 2। ग्रुप 1 का मतलब है इंडिया के जर्नल, जिसका पब्लिकेशन, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग इंडिया में होती है। दूसरा G2, जिसके अंदर काफी स्कोपस जर्नल शामिल हैं, जिसकी प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन इंडिया से बाहर होती है, विच इज नेशनल और इंटरनेशनल। अब ये बताओ कि इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी स्कोपस का जर्नल है वो यूडीसी केयर के जितना ही इंपॉर्टेंट हुआ। तो जर्नल चाहे स्कोपस में हो या आपका खुद का यूजीसी केयर का हो, नैक की नजरों में दोनों एक हैं। डू यू एग्री? यस। ये रीसेंट फिनोमिना है जो आने वाले टाइम पर चलेगा। तो माय सजेशन इज दैट सिंस वी आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, वी आर रिसर्चिंग इन इंडिया, इट इज ऑलवेज गुड कि आप सिर्फ और सिर्फ यूजीसी केयर को देखो, उसके जर्नल्स के हिसाब से आप स्कोपस की तरफ जाओ। हर जर्नल जो स्कोपस में है वो यूसी केयर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम यूजीसी केयर जर्नल को डीलिस्ट करती रहती है। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो जर्नल है उसकी ऑथेंटिसिटी यूजीसी केयर की वेबसाइट से चेक करें, बिकॉज दैट विल गिव यू द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, राइट? इसीलिए we have to be very very clear for that. I'm sharing my screen with all of you, right, so that you are able to understand that how the things are working over here. And are you able to see my screen, which is basically a UDC website? Yes, it is. Right, great. So you're able to see over here this particular thing, that UDC care list has only and only two groups, which is care list group 1 and group 2, right? That is one. Second, which is very very important, is that UGC on regular basis puts across journals out from their listing, right? And when I'm saying out from their listing, right, you are able to identify the same thing which is being out there with the perspective कि वो जर्नल उस लायक है या नहीं है। वो सारा काम यूजीसी रेगुलर बेसिस पर करती रहती है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखेंगे, right, so you are able to see so many notices which comes across in that particular regard, right? Anyone having any particular question at this particular point of time? If not, I will move ahead. If yes, please share if you have any questions in your mind at this particular point. Anyone having any question in their mind at this particular point of time? Participants, you are free to ask questions. Ask any questions if you have in your mind. Are we clear at this particular level? Right. So now on that particular note, let me give you that if we are moving across for this particular
listing out here, as you can see on this particular website, right? And you're able to identify that which particular thing will be out there. So एक अभी आप यहाँ पर देखिएगा चीज that will give you a very good indication with reference to your research, because research ecosystem is very fragile as of now, right? और हमें देखना पड़ेगा कि हम उस जर्नल में पब्लिश ना कर दें, राइट, जो जर्नल यूजीसी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज इस जर्नल का हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा, राइट? और अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, विच मीन्स दैट the research has no particular value in that particular regard, right? So therefore it becomes very important for us to be very sure of that, right? So इसीलिए जरूरी है, सबसे पहला काम अगर आपको कोई जर्नल पब्लिकेशन करनी है, प्लीज गो ओवर हेयर, सेलेक्ट, ठीक है, जर्नल नेम, लेट्स सपोज, right? So if I look across, the first thing it will give to me is to ask me my user ID and a password, right? So everybody can make this particular user ID and the things associated absolutely free, ठीक है? तो the first thing is कि आप सब के सब इस पर अपना user ID draw कर लीजिए. Seema, what's your question? That always international. Seema, this was something of past, but in today's scenario, everything is same. Many of the universities are accepting peer-reviewed and blind peer-reviewed or referred journal. Right. See, if we look across on a very perspective of this, even there is no clarity, right? If you look across for central universities, still they have their own views about UC care list, and they're accepting the double blind peer review as well. But it is always good to go for the journals which are indexed. And in Indian context, the best of the index you have to follow is with reference to the UGC care in that particular regard. Right? What exactly is your question? Yeah, it is. Here? Yeah, you have cleared, sir. Because I have whatever, sir. And mostly we're also saying to the students, yes, sir, many of the universities are accepting peer-reviewed and referred or indexed journals while interviewing a candidate. Right. But see, the scenario is that it might be possible that in another 1 month, maybe 2 months, it only becomes UGC careless, right? See, India is a very densely populated country, right? We have so much of population, so we cannot have everything under UGC because हमारे पास bandwidth भी नहीं है. That is the thing is out there, but it is always good to have a quality, and the minimum quality we have to ensure in publication is the UGC care list. Thank Does you, it? sir. Yeah. Does it make sense to everybody that the target for your publication should be at least the journals which are into UGC care list? Agreed? Agreed? Quality parameters are set in. Yeah. So for that, I'm giving you one exercise as of now, that please develop your UGC care user ID, right? And identify at least 2 journals of your field, and please put them in the chat box. We have a question in between. In care list view, it is written and sometimes indexed. What exactly is your question? I'm not able to get it, Seema. Right, all of you are clear what to do in the next 5 minutes. You have to create your user ID, right? And you are
required to identify 2 journals where you will go across for your respective field of research, right? So you have to move to this particular website, which is UGC Care, right? And you're able to log in. And for login, they will ask you first to have a sign up. Because I have already signed up, I have a login. In your case, it will be a sign up for that, right? Please do that. See, index in Scopus or index in websites again means that you are following a particular quality listing, right? So the indexing is same, but like I said, in Indian context, it is now everything is under UGC. So please develop your login details and then try to identify 2 journals which you think is good for your specific domain. And yes, it is valuable, Seema, but if you look across the Indian research scenario, in another 1 or 2 months, they will be at par more or less. Right. It is basically looking out for email ID with the institution email ID. Because it is a government enabled work. So that is why they are looked in their similar reference. I hope all of you are in a process to do it and is able to do that. Anyone facing any problem, do let me know. It has to be institutional ID if possible. That will make the things clearer. Don't need to know the password. You have to create of your own. Right? It is your own email ID of institution. For example, in my case, it is Nimit Gupta
@ncuindia.edu. Sir, many of the students, if they are not provided with any ID, then they can log in Hmm. with new one Yes, or in that creating case, their own. yes, you have to create their own. If anybody has done with, they can drop their response in the chat box. Good. We have seen some of this one have done that. Good, very good. So, see, the idea is that by this particular, you are able to identify something new, and you are able to now have the access of this particular UEC care, where you can segregate that whether a journal is adequate or not, open access or not, predatory or not, and the similar kind of things, right? If you're unable to log in, you have to basically look out for your institutional email ID. See, your institution must have given you email ID, na? The institution what you have, right? Once you have that particular ID, you can search over that which particular journal you want to meet on, right? We will be having a session tomorrow at 10:30, right? So you have little bit of time, approximately, if we look across 15 hours or so, right, where you can move on and search out for the journals, try at your own. If not, we'll start tomorrow's session in the similar fashion, right? Now, before I close this particular session, I just want to know that anybody of you have any doubts in mind? Any one of you have any doubts in your mind? Anyone having any doubts in mind? Unable to log in is only because you are supposed to use our official email ID. For you, it is always good. See, understand that you have to basically go on, but with your have you see the first thing you have to do is you have to sign up. I hope everybody of you signed up first. And a login only happens when you have sign up. In my case, it is login because I already have a sign up. So in your case, you have to first sign up and then everything will happen. Do you understand the difference between sign up and login?
Anyone having any other doubt? No, we can do, you can search with reference to the subject, man. Right? You can search with your subject as well. Right. So for a clarity, what we will do, I look for one volunteer who will be navigating with all of us in tomorrow's session, right? And who will be sharing everyone how to move, proceed further. Any volunteer, who want to navigate everyone in tomorrow's session. The first thing we do that thing, and then we will have a discussion moving on. Any volunteer? Right. So who will be the volunteer, Sonu? Kiran will. Kiran is saying. Okay, Seema is. Okay, Seema, we will have you as a volunteer for tomorrow. No, Who will sir. be, Seema is saying that she has number of doubts. yeah, Have been clarified by you, especially yeah. about So UGC. So she it is. is done. Yes, yes. Yeah. So there is She no is doubt. satisfied. Right. So Seema, can we have you as a volunteer for tomorrow? So Kiran also. Kiran, right? So Seema and Kiran, we are finalizing. They will be navigating all of us in that particular regard, so that there will be no doubt in anybody's mind, right? And for tomorrow's session, right, the topic what we have identified is very, very specific, right? And the tomorrow's session, we will be focusing across with certain specific aspect, right, which links with how the entire research will work in this particular regard after you know everything in this particular reference to it, right? So that's why for tomorrow's session, we'll be focusing upon on Shapra, Romeo, online research aspect, copywriting, which will be closing many of the things altogether, right? So over to Dr. Sushila for your closing comments. Thank you, sir. I do not have words to explain what a wonderful, effective presentation and live interaction presentation you have rendered from this platform, and very much benefit for the students. I think in the future it will surely bring them on the right track, to avoid go for or falling a prey for predatory journals, I think. So hoping that they have cleared lot of doubts, as already we have seen in chat box. There are a lot of doubts have been cleared regarding UGC careless indexing, open access, non-open access, hybrid practicing, and so many other doubts. And still we have a big session. You can say it is a crux of all the sessions tomorrow on. That is Nimit Gupta sir is going to take away. So do not, you are again requesting, I'm again requesting, do not skip on this session which is going to take tomorrow. So Right, thank you, Nimit Gupta yeah, sir. like for tomorrow we will be starting at 10:30. From 10:30 to 10:45 we'll have a demonstration by Rekha and Kiran. Kiran, right, and from 10:45 to 11:30, let's say we'll talk about Shapra Romeo, and from 11:30 to 12 I will be available for any questions from your side, any doubts from your side, and I will make it sure that even if it is beyond 12, every doubt will be solved on, right? So come up with as many doubts as you have, right? That is one. And second, tomorrow I will be sharing my number and email with you. And apart from this particular platform, please feel free to have a discussion with me on a mutually convenient time, so that we all should be a good researcher in our life, right? Idea I is pretty clear that we help. देखिए हम लोग को भी अच्छे हमारे mentors मिले तो हम आपको समझा पा रहे हैं, है ना? You will be the mentors for somebody else in another 4 5 7 8 years, right? तो ये हमारा भी फर्ज है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं, आप अच्छा पढ़ाओ तभी ऐसे सिस्टम चलेगा ना. So that is why please feel free to have an interaction on that. Stay blessed. Thank you very much. And we'll meet tomorrow sharp at 10:30. Thank you, Dr. Sushila, madam.
Thank you, sir. I am highly obliged that you have taken this marathon sessions continuously. Just only have a gap of half an hour. So wonderful! It is far beyond of the expressions with words. And I was searching out for a long time that we would have interactive session for the students so that they can get out of their query and doubts regarding these publications. So thank you from this platform. I'm highly obliged that you have taken the session and clear out a lot of doubts of the students and the participants. Thank you, Nimit sir. Got a Thank you, wonderful ma'am. Good interactive day. session. Thank you all of Thank you. you. Have a good day ahead. So, participants, there is an information tomorrow. Sir is going to take a session for Sherpa Romeo and resource to check publisher copyright and self archive policies. So do not skip this session in any case. Yesterday, I have also requested you, being a teacher, being a scholar, I'm requesting you consistently. But it is your luck or your bad luck that you are missing or continuing the session. It's वही बात है कि choice is yours. इतना अच्छा सेशन अगर आप लूज करते हैं तो वही बात है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ध्यान प्रभु गुण गाऊं। जिसको ऐसे अच्छे गुरु मिल जाएंगे वो अच्छा टीचर बनेगा आगे चलकर, वो अच्छा स्कॉलर है तो वो अच्छा सुपरवाइजर भी बनेगा। अगर उसके मन में डाउट्स रहेंगे तो वो डाउटफुल टीचर रहेगा, और डाउटफुल टीचर जो है वो डाउटफुल स्टूडेंट्स क्रिएट करेगा और डाउटफुल रिसर्च ही होंगी। So that is from our side. So it is time to depart now. Dr. Sushila Sharma is um, taking it. I don't know, but I will speak. So it's time to say bye bye. We will meet tomorrow, and stay healthy, stay safe, but keep alive with a lot of knowledge. Yes, surely we will share recording. Yes, yes, Indu. We are sharing recording side, but it is better. Recording is actually one-way interaction. जब आप two-way interaction करते हैं, so at that time you are getting much better and better in your knowledge. So I will try to whatever I am getting, I am sharing with you side by side. Let's say bye bye now. So we will meet tomorrow at 10:25. 5 minutes before you will have to join 10:25. 10:25 पे 10:30 की बजाय, ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर सके। 2 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू टेक देयर लाइव डेमो। जो उन्होंने आज सीखा है वो कल प्रेजेंट करेंगे। सो इट विल बी हाईली मोटिवेटिंग फॉर यू। थैंक यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म।